Namaste, myself JVN Dr. Priyanka, Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University. Introduced lecture, we are going to discuss about entrepreneurship portfolio development, especially in terms of agriculture science in our university. In our university, women empowerment through education and academic exposure, co-curricular activity, community development activity, extracurricular activity, and value-added courses, portfolio development. Portfolio development. What is portfolio development? Every student involved at the university is given a chance to understood area of interest, career objective, and long-term dreams, ambition at the beginning of their education. To fulfill the university mission, every student has to select portfolio and university concentrate on their portfolio development from the first year itself. There are three categories of portfolio students select any one according to their choice and interest. Corporate portfolio, government portfolio, entrepreneur portfolio. Let's Let's start in entrepreneur portfolio. What is entrepreneur portfolio? Entrepreneur portfolio is one of the activities for inculcating skill and enhancing knowledge required to develop and implement a business idea. A student who dream to be an entrepreneur and want to establish their startup, they register themselves under this portfolio. And what is the objective of an entrepreneur portfolio? Mainly objective, makes a student aware and understood about opportunity as entrepreneur in various domain and proper student prepare student for competitive and analytic exam by giving practice questions and encouraging student to participate in activity of national entrepreneurship network for interactive discussion and collaboration project. Giving students tips about development a unique perspective of idea generation. Providing advisory about startup policy, financial policy of bank for entrepreneur. List of activity of entrepreneur portfolio. University startup said University Incubation Center and University Innovation Center registered and Startup India learning programs and entrepreneurship in agriculture. What is entrepreneurship in agriculture? Importance. In the absence of local entrepreneurship, the opportunities in agriculture are hijacked by outsiders, particularly the urban businessmen and traders, leading to misuse and lack of employment for the farmers. Considering the growing empowerment in rural area and slow growth of the agriculture sector, it is necessary to take the opportunity for promoting entrepreneurship in agriculture, which in turn can address the present problem related in agriculture production and profitability. What is the importance of agri-entrepreneurship? And many fields, reduction of poverty and empowerment, labor intensive. Also, agri-industrialization leads to development of rural area, balanced country development, and also provide utilizing local available resources, capital creation, and improvement in per capita income. Concept of entrepreneurship. Entrepreneurship is the act of beginning an entrepreneur who start any economic activity for being self-employment. Entrepreneurship is attained to create value through recognition of business opportunity. It is basically communicative and management function to mobilize financial and material resources. And the entrepreneurship activity is governed by various combination of socio-economic, psychological, cultural, and other factors.
That's our caste, religion, family backgrounds, level of education, prescription, occupational background, migratory factors, entry into entrepreneurship, nature of enterprise, investment capacity, and ambition. Entrepreneurship is a creativity activity. Agri-entrepreneurship and इन एग्रीकल्चर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से हैं, क्या क्या उद्यमिता कर सकते हैं. प्लांट इन चार्ज एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज के अंदर कर सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सीड इंडस्ट्रीज के अंदर, प्राइवेट रिसर्च स्टेशन में फार्म मैनेजर, प्राइवेट बैंक्स के अंदर, एनजीओ, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर. So many ideas in entrepreneurship. That's like dairy tech, organic farming, pharmacy, fertilizer industry, apiculture, and beekeeping, sericulture, nursery management, mushroom production, storage unit, vermicomposting, and that also. And other opportunity for entrepreneurship in agriculture, there's agri and food inputs में, agri and food inputs में क्या क्या entrepreneurship कर सकते हैं. That's like सीड के अंदर, मूंगी सीड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, एग्रोकेमिकल, बायोटेक, इरिगेशन प्रोजेक्ट में, फार्मेसी में, पोल्ट्री फीड, डेयरी फीड, फिशरी फीड, etc. एंड वेयर हाउसिंग में भी अपन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन में, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउस में, प्राइवेट वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज, etc. Next slide pictures. Unit, agriculture, poultry, post harvest and greenhouse and other processing. प्रोसेसिंग में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग है, प्राइमरी प्रोसेसिंग जैसे ग्रेन मिलिंग में, जैसे राइस मिलिंग में आप जा सकते हो, एडिबल ऑयल, डेयरी टेक में जा सकते हो. इनमें जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है उनमें भी अपन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और खुद का व्यापार खोल सकते हैं. हाई लेवल प्रोसेसिंग में जैसे स्वीट्स बनाने में, बेकरी में, पेय पदार्थ बनाने में, डेयरी में, मीट में, इनमें भी अपन प्रोसेसिंग यूनिट में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं. एंड सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट एंड बेवरेज चेन, etc. एंड एजेंसी इन्वॉल्व फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से एजेंसी इन्वॉल्व है फार्मर्स के लिए एंड फूड प्रोसेसर के लिए, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल रिसर्च, etc. And in our university have 3 center: innovation center, incubation center, startup cell. An innovation center, University Innovation Center began with innovations in various disciplines in year 2030. It has been catering to the work of identification and screening of idea with an objective to bring innovation. 13 of the Innovation Development Center are registered for parents. And in the incubation center, University Incubation Centers provides its students with the required financial, technical, and marketing resources, as well as offers an opportunity to provide their valuable insight to provide grassroots level implementation of commercial activity to stimulate the growth of the country, and it providing various facilities like infrastructure, finance, and monitoring, etc. And in startup cell, university has established a startup cell to inculcate a culture of innovation, driven entrepreneurship, and to promote startup. The center organizes business plan, competition, provide training, and encouragement fund for startups. And University Incubation Center is provided following facility that's like office space, IT infrastructure, meeting room, hostel, training, business, coaching, financial support, laboratory, workshop facility, etc. And list of activity conducted in University Incubation Center and Startup Center like idea block activity, brainstorming exercise, ice breaking exercise, etc. And startup can the number of startup incubated campus various like JV in Bajar, hospital management, Dr. Garg Digital Herbal Garden, my profile, etc. रजिस्ट्रेशन फॉर पोर्टफोलियो, अपन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, आपको जैसे एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो के अंदर जाना है तो अपन कैसे रजिस्ट्रेशन करें.
तो सबसे पहले माय एकेडमिक प्रोफाइल में जाएंगे। माय एकेडमिक प्रोफाइल में जाके www.jvwn.ac.in पे अपन क्लिक करेंगे। ये ऑफिशियल साइट है ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी की। वहाँ क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन आएगा। स्टूडेंट लॉगिन के बाद के अंदर उसमें 3 एक्टिविटीज आएगी, करिकुलर, लीव प्रोसेस, माय एकेडमिक प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो माय एकेडमिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ स्टूडेंट लॉगिन आएगा। स्टूडेंट लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड डालें। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में एकेडमिक एक्सपोजर आएगा। एकेडमिक एक्सपोजर के बाद के अंदर उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज के अंदर पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है। उसके अंदर आएगा गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो। तो एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद के अंदर पोर्टफोलियो एक्टिविटीज के अंदर आएगा, वहाँ भी अपने एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है। थैंक यू। And in this lecture, we learned who the president of university about entrepreneurial portfolio, and this session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. And I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to solve it. Thank you very much.